खतरनाक मगरमच्छ, विषैले सांप और अजगर समेत कई प्रकार के जीव जंतुओं का प्राकृतिक आश्रय है। सदियों से यहाँ खतरनाक जीव जंतुओं के साथ मानव जाति का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। सही मायनों में यहाँ संस्कृति और प्रकृति का मिलन होता है। डेल्टा की उर्वर भूमि और मछली पकड़ने के प्रचुर अवसरों ने यहाँ के निवासियों को जीव जंतुओं के साथ खासकर बाघों के साय में जीना सिखा दिया है। आइए सुंदरबन क्षेत्र के निवासियों के जीवन के बारे में और ज्यादा जानते हैं। संस्कृति यात्रा के पहले पड़ाव विशेष में देखते हैं फिल्म टाइड ऑफ लाइफ इन जज। Tide country. A vast labyrinth of rivers where the Ganga, Meghna and Brahmaputra traverse the subcontinent to meet the sea. This is Sundarban. On these banks grows a dense and mystical forest. Full of shadows, mirages and illusions, it seems that the forest has eyes that look back at us. But nothing intrigues us more than its most famous resident, the Royal Bengal tiger. He is Dokhin Rai, the omnipresent lord of this southern jungle. Our fear of him confines us to the boat. And if not for these cameras set up by the forest department, we would have never seen the many intersecting worlds that live inside. Although beautiful, the forest is an unforgiving place. And in an endless cycle, death stalks life. The people here live under the tiger's looming shadow. And yet, since the forest is their main source of livelihood, they have to enter it, often taking terrible risks. From such encounters springs the folk tale of Dukhe, a young boy trapped in tiger territory. This intimate contact with the forest, despite the obvious dangers, evokes a sense of companionship, an age-old bond of empathy and mutual respect. We are surprised by the incoming tide. Rising waters flood the rivers and streams around us, transforming everything. An old friend has come visiting. Shorab was born and brought up in the Sundarbans, and now, through his songs, tells its many tales. 3 centuries ago, the tides of life brought the first settlers here. They cleared the forest, raised walls to keep the river out, and claimed land to build their nests. Despite the many hardships, promises of a new world stretched ahead. The forest will feed us, and the tides will teach us the rhythms of life. বসে ঘরের ভেতরে ময়ূরা ময়ূরী করতেছে রসের খেলা গোসাইজি কোন রঙে বাঁধে যাচ্ছ ঘর তুমি কোন রঙে বাঁধে যাচ্ছ ঘর গোসাইজি কোন রঙে বাঁধে যাচ্ছ ঘর. But in most villages we met only women, children and older men. Where have all the young men gone? Bhata. Water recedes dramatically at low tide, revealing mud that glitters like gold in the setting sun. And then, a new kingdom springs to life. These mud skippers are perhaps what our earliest ancestors on land must have looked like. As we wait for the waters to come back in,
we meet a man who has drifted to faraway Tamil Nadu. In the meantime, our fascination for the tiger continues. We muster enough courage to cross over to the other side, into the kingdom of Dokhin Rai. Fearing the tiger is like fearing a ghost. It is an ancient fear. In this kingdom of thorns, he walks a solitary walk, keeping a strict account of life and death. He is the jungle, and the jungle his. The tale of Bono Bibi and Dokhin Rai is often told through folk songs and open-air theatre performances, a tradition that is fast vanishing. Shorab takes us to meet one of its last remaining composers. Allah sent Ma Bono Bibi to protect the tight country. Revered by both Hindus and Muslims, she is the goddess of the forest. And it is to her that Dukhe called out to when he found himself alone. Ma Bono Bibi leads Dukhe and the others safely out of the forest. But Dukhin is not a foe easily defeated. High-intensity storms regularly hit Sundarban. In fact, it is here that the word cyclone was first coined. The monsoon, which brings death and destruction, also carries with it the seeds of life. For we saw tides transporting mangrove seeds to distant shores, where only a few will take root, and the circle of life will begin again. As evening falls, it is time for the Jatra artists to go back home. On an abandoned ghat, we meet a poet. We wake up to find that a dense fog has enveloped us. But little did we know that this was just the beginning, a broken ship. Is this a premonition? But of what? Here, everybody speaks of ruins buried deep inside the forest. But over hundreds of years, the jungle has almost entirely swallowed whatever remains, making it impossible to learn anything about the people who lived here. Back in Mr. Vishal's Canning Museum, we find evidences of a history now permanently shrouded in the fog of time. Like this water buffalo, now extinct. What hands built these, and where did they disappear? These are the last waters of the Ganga. An ill-advised human intervention upstream has altered the river's current, converging its flow onto this tiny island. Ghoramara has no docks. The surge keeps washing them away. The river rushes past, ravaging the edges of the island, eating away land and exposing the sand underneath. This was once a pond, and these are roads that lead nowhere. But Ghoramara is only a forewarning. The delicate balance of life in Sundarban has already entered a new phase of uncertainty. What is certain is the slow but relentless rise in the waters of the sea. Meanwhile, life goes on in Ghoramara, and these are its final few moments. But this film is also a chronicle of a Sundarban that is now fast vanishing. Its future, regardless of the promises it held, now far beyond its reach. Are we here then merely to bear witness to the beginning of an end? As we leave Sundarban behind, I couldn't help feeling that our lives in faraway cities are intricately linked to its fate. And if Ghora
Mara is the premonition of things to come in Sundarban, then Sundarban is a premonition of what the rest of the world, especially its coastal cities, will face very, very soon. For we are, after all, in the same boat, floating in the tides of life, surrounded on all sides by the raging waters of time. Sundarban returns to me in my dreams. And in my dreams, I am back in the tide country, where the angry waters of the sea have receded. Some creatures skip out of narrow streams in search of food or a friend. Some grow wings and fly away. A forest awakens, magically rising from the ground. And Sundarban is born again. अभी आपने देखा सुंदरबन के निवासी किस तरह प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सौहार्द बनाकर रहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव धरोहर की ओर। ख्याल गायकी के दो घरानों जयपुर अतरौली और आगरा घराना की पारंपरिक शैली को सहेजे विदुषी देवकी पंडित न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। गोवा के एक संगीत परिवार में जन्मी देवकी पंडित ने सबसे पहले अपनी मां उषा पंडित से संगीत की शिक्षा ली। फिर पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी और पद्म विभूषण विदुषी किशोरी आमोनकर की शिष्या रही। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में पेशेवर गायकी की शुरुआत की और आज ख्याल गायकी के ऊपरी सोपान पर विराजमान हैं। शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त विदुषी देवकी पंडित भजन, गजल और पार्श्व गायन से भी श्रोताओं को लुभा रही हैं। आइए सुनते हैं विदुषी देवकी पंडित को।
आयुषी देव की पंडित की मधुर गायकी के बाद चलते हैं माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक महत्वपूर्ण परियोजना चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक दिखाने आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित मथुरा विकास खंड की ओर। किसी समय मथुरा एक गांव होता था, पर समय के साथ और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण इसका विस्तार होता गया। मथुरा भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और द्वारकाधीश मंदिर है। तो आइए चलते हैं मथुरा की ओर। भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक मथुरा उत्तर प्रदेश का एक विकास खंड है, जहां हिंदी, उर्दू और ब्रज भाषा बोली जाती है। मथुरा की स्थापना का सही अनुमान लगाना कठिन है। इस पौराणिक खंड का उल्लेख हिंदू, जैन, बौद्ध संस्कृति से जुड़े कई ग्रंथों में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए ग्रीक यात्री मेगस्थनीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका में मथुरा और ब्रज भूमि की संस्कृति का वर्णन किया है। मथुरा का राजकीय संग्रहालय, जो लगभग 150 वर्ष पुराना है, इस कला की धरोहर को सजीव रखता है। संग्रहालय में मौर्य और गुप्ता काल की ऐतिहासिक मूर्तियां, शिलाएं, घड़े और अन्य बर्तन प्रदर्शित हैं, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की कला और दृष्टि को उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भारतीय शिल्प कला के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक माना जाता है। यह कला मौर्य काल में विकसित हुई और बाद में कई कलाकारों ने इसे नई दिशा दी। इतिहासकारों के अनुसार हिंदू, जैन और बौद्ध देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाने की विधि भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आज भी हमारे देवी देवताओं की छवियों में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की प्रभावशाली झलक दिखाई देती है। कहा जाता है कि मथुरा के कलाकारों ने ही पहली बार देवी देवताओं की मूर्तियों को आकार दिया। मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर भारतवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है।